execution example in data table that you remember we did it in class? Sir, consolidation. I'm asking you to tell me one question where we are going to use data table. Consolidation is altogether different function. You know there is a technique called as data table. Yes. Can you tell me any one execution that you did in your class using data table? एंड में कुछ नहीं निकला सर पास. तो होना चाहिए था, क्यों निकाला था मैडम? डिस्काउंट फैक्टर और जब हमने सीएफ निकाला था उसमें फिर व्हाई वी डिड इट डेटा टेबल? Yes, you are correct. We did calculated discounting factor and compounding factor value using that data table technique. It was very fast. But why it is only data table? Why it cannot be done using goal C? Question to you. क्या बोलूँगा यार? मुझे अपनी उम्र का लिहाज करना है. मुझे ना आप लोगों को देख के आपकी एज में जाने का मन करता है. देखो आपने तो क्या पकड़ा था पता नहीं, बट नहीं क्या आ गया नहीं. वी डोंट नीड एनी मूवमेंट, बस वी आर इनटू इवैल्यूएशन प्रोसेस. दिस इज इन रिकॉर्डिंग मोड. I asked you a question on data table. You said it correct, but it is in a discounting and compounding factor. You can do it. I am saying another thing. Why not goal seek in this situation where you are calculating discounting factor and compounding factor? Answer is very clear, straightforward. Why data table only and not your goal seek? सर आंसर In a data table, you have two variables which can be changed. Goal seek only one variable is allowed. मुझे याद वेरी गुड. देखो अभी दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सर मुझे याद था, प्लीज एक और पूछ लो, एक और पूछ लो. टीचर, यू सी सम टीचर्स मे आस्क यू 7-8 क्वेश्चंस. Second situation is where teacher may ask you only 2-3 questions. Only 2-3 questions. You feel that yeah, this is not sufficient, but teacher will say, boss, I am done. Because for few, one question, how you are responding to my first question, I don't need my second, third, fourth question. Your confidence will speak. Overconfidence means teacher will test you for long. So stay normal. Okay? Overconfidence means if you don't know something, don't take a guess. Say, I don't know. And if you allow, I can take a guess. Okay, but guesswork is not accepted. In your last CA, where many of you did guesswork, so for them, they are going to lose their marks. How we are going to check it? Through your CA, Excel sheets. Okay, now you see, last question is done. How many text function we did it in class? Just name them, nothing else. Text function. Text function. Formula. Subcategories. No idea. Okay. Left, right. Mid, Yours is got mid, upper, lower. Easy question. We'll take few seconds pause. Consolidate. Consolidate is not a text function. Substitute is. You see, let me tell you one thing. Please listen to me. This session is being recorded. When it will come to your view through public media, make sure you check this video. What I'm trying to tell you is like you cannot have a view at her face. I'm looking at her face. What she's doing is she's answering it in a manner. Is it correct or no? It is not. So you cannot raise a query to faculty on duty. If you are confident, you answer. If you have a doubt, don't answer. Okay? So you can see it when you see this recorded version later. ये YouTube पे थोड़ा. पता नहीं अभी we don't know the platform. जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा hit करेगा
Facebook पे is it possible to monetize? Yes, sir. I don't know. But अभी तो I'm right now active on Facebook. I'll give you 100% of my earnings from this channel. But what was the question? Last question. Text. Complete the remaining text functions. You may be again called back, boss. You can again be called for second round of evaluation. सारी तो बोल दिए नहीं अभी बचेगा. कौन से बोल रहे बताइए अभी अब सुन नहीं रहे थे अभी. लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट इजी हो गया. लेफ्ट राइट सेंटर मिड अपर प्रॉपर लोअर and then substitute, maybe substitute came in. That's all. What are the remaining ones? अभी बचे हैं यार 11 हैं कम से कम. 11 में से 6-7 डन, 5-6 still pending. अब बोलो कुछ. आई वाज अपसेंट था कितने साल एब्सेंट रहोगे यार? सेमेस्टर के पहले दिन एब्सेंट थे, मिड टर्म नहीं एंड टर्म में इवैल्यूएशन हो रहा पूरा एब्सेंट थे. सर 2 हफ्ते से नहीं, आपको कवर तो करना पड़ेगा ना. वीडियो नहीं देखा यूट्यूब पर तो वन देखो. रिप्लेस इज वन. देखो सीआर कंफर्म कर देगा आपको. यस सर ही आ रहा है बस बस नहीं सीआर बाकी के बताओ. Concatenate. कंकैटिनेट करेक्ट. ट्रिम Len. सर लेंथ बोला इसने Length नहीं बोला. लेन नहीं बोला. सम इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन. अच्छा चलिए नेक्स्ट Proper हो क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज I have my name which is Anup Mohanty is written in a cell. I would like to split this into 2 different cells. How to do? सर सर एक्सप्लेन करके दिखा दीजिए. Explain. Viva is all about Viva. सर करके दिखा सर, करके दीजिए. Very good. Sorry, madam. Sorry. You also said consolidate. Concatenate. How can it be concatenate? Concatenate is to merge. I want to split. अच्छा, let no problem. What is data parsing? Parsing. कितने anyone who knows on data parsing? कितने दम लोग हैं? Same question पे कितना loss ले रहे हैं? You see, data parsing is nothing. Text to column. What do you do with text to column? Split your information into multiple cells. Now let's say I have done my split. I would like to bring my name back as it is without doing something. नहीं सर अगर मैंने सुना तो सबने सुना. Sir, कैमरे तक आवाज नहीं आई. Okay. concatenate. Concatenate. Is there any substitute to concatenate that you know? manually Concatenate के अलावा there is nothing which merge cell together. कैसे? Is equal to एक cell merge करें. is equal to arrange, and when you leave it, concatenate will happen. तो ओवर एक्साइटेड पीछे जाके ओवर एक्साइटेड. अच्छा ये आया नहीं है अभी तक. आ तो गया तो पहले राउंड में गया था. आर्यन नहीं आया पहले राउंड में. एक आर्यन है एक अरियन है. अभी तो इसको गारंटी अरियन इज डिफरेंट. अभी आएगा अगले राउंड में. ईयर गोइंग सर पानी पड़ रहा है. So, A, how do I get an output in scenario manager? How do? What is the name of that output sheet? What is the name of that output sheet in scenario manager? Same question. In scenario manager, what do you get as your final output? The sheet has a name. Scenario manager. I'm not able to see scenario manager. Something else. Partially it is correct.
निकल के जो आएगा Scenario manager is managing the scenario. Output is not scenario manager. A to Z. समराइज करके आंसर What is that summary called as? मेरे सामने खुला हुआ. It is scenario summary, not scenario manager. You need to understand there is a precise difference. अच्छा, in scenario manager, what is your first step? Select the cell. Select the cell for what? सर वो तो कमांड पे डिपेंड है ना. वो डिपेंड है कमांड के ऊपर. वेरी गुड. लेट मी गो टू अमन. अमन, हाउ डू यू डिफाइन, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू इनिशिएट सिनेरियो मैनेजर टेक्निक? नो आइडिया? यू आर ऑन लीव? वेरी गुड. ऑन रिकॉर्ड यू आर ऑन लीव. नेक्स्ट, इमेजिन बाय एनी चांस दिस वीडियो गोज टू योर फैमिली थ्रू पब्लिक सर्कुलेशन. सर वो भी हंस लेंगे. तुम्हारी बारी आ रही है. पानी कहाँ जा रहे हो? ओके ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आपको नहीं आता? यू नो सिनेरियो मैनेजर. यानी फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग सर्टेन सेल्स फॉर नेमिंग पर्पस. सर वो करके अलग चीज होती है, अब से याद थोड़ी रहता है. Naming is important. Cell naming is important. How to name a cell? How to name a cell? By typing. By typing. Where typing? In the cell. In the cell. So by typing in the cell, you can do cell naming. Yeah, this is why you get this. Yani bumper crop. Yes, sir. It's a practical course. पता ना. बट जहाँ पर शो होता है, जहाँ पर हम हमारी कौन सा सेल जैसे F4 है, F जो भी है वहाँ पर लिखते हैं नेम करने के लिए. Can I do it for a group of cell together? Cell naming. Yes, sir. Which tab is to be used? Yes is correct. You need to go to formula. In formula you have name manager. Where do I find charts in your Excel sheet? Which tab will take me to charts? This is all memory based. सर याद जैसे दिमाग में कितना ही स्कोर हो जाता है. अरे याद थोड़ी रहेगा. याद प्रैक्टिकल कोर्स ना. So practical में you have a component of Viva which is worth 30 marks. This interaction is worth 30 marks in end term. And in 30 if you get 5 is very low. Try to get, you see people who fail to do their execution should try to get maximum in Viva along with the write-up marks and some scores in your execution to get a pass grade. Everything is being recorded. How to create dummy email IDs from a data set? Which function would you like to do? Have you heard this term pivot table? Where do you see pivot table? Which tab? सर याद नहीं. Pivot table. Next is your turn. Insert. Insert. If I have been given a data of a class and I would like to sort them in ascending order, ascending alphabets A to Z or Z to A, how to do it? सर होम में सर ऑप्शन होता है ऑर्डर. क्या नाम है उसका ऑप्शन?
चल तुम्हारा भी काम है क्या? सर लिखा हुआ था Still 12 minutes to go. We can have 2 rounds. Madam, where to do this? सर ये लॉन्ग Madam, time is yours. सर डेटा में जाके नहीं होम में ही होता है वो। डेटा में नहीं होता? Are you sure? Yes, sir. डेटा में होता है नहीं होता? होम में होता है? होम में होता है डेटा में होता है? होम में ही डेटा होता है सर होम में ही डेटा होता ये ऑप्शन होता है ये क्या हाँ है? टैब में डेटा टैब है, होम टैब है, कोई किसी के अंदर नहीं है। हाँ मतलब सर तो ये कहाँ मिलेगा? होम पे या डेटा पे? होम पे डेटा पे नहीं है? नहीं Are you sure? डेटा पे होता है। होम पे होम पे नहीं होता? दोनों में होता सर होम में होता है है। टेक्निक का नाम क्या है? गोल सी? अच्छा, let's say this is a class where we have student named Aryan with same spelling. There are multiple names. Yani I do have a data file where Aryan 1, 2, 3, 4 they all are mentioned. Many people are there with name Aryan, and their roll numbers, registration number, everything is mentioned. If I run this remove duplicate option in my data set, will I get duplication in my data, or duplicate names will be deleted out? अरे एक लिस्ट है हमारे पास जो उसमें स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उसमें आर्यन 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 1, 2, 3, 4 करके 5-7 बच्चे हैं, उनके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब मेंशन है। अब मुझे अपने डेटा में डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, तो आई यूज दिस ऑप्शन कॉल्ड एज रिमूव डुप्लीकेट, डेटा टैब में मिलता है। उसको जब मैं रन करता हूँ तो वेदर दीज नेम्स विल बी डिलीटेड आउट और इट विल बी स्टिल देयर इन योर डेटा। आप क्या कहते हो? डिलीट हो। आप क्या कहते हो? सर डिलीट हो जाएगी लेकिन उस वाले टेबल में रहेगा अलग टेबल इसमें मैं नहीं आता कैसे? डाटा एक है, वहाँ पे डिलीट मार के रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, अब और कहीं डाटा कहाँ स्टोर हो जाएगा? सर्वर है क्या जहाँ से वापस रिट्रीव करेंगे? डेटा डिलीट भी इज गॉन, सर डिलीट हो जाएगा डिलीट। दूसरी शीट में चल डुप्लीकेट कैसे? वो आधे डुप्लीकेट, सर रिमूव हो जाएगा सर तो इसका आंसर ये रहेगा डाटा डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। आधे डुप्लीकेट्स, आई एम सेइंग 3-4 स्टूडेंट्स विद आर्यन नेम बट दे हैव डिफरेंट रोल नंबर्स, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर्स, हाउ दे आर डुप्लीकेट? मैंने आपने बोला कि अगर जो डुप्लीकेट होंगे अगर वो रिमूव कर What is the duplicate? Duplicate means similar data getting repeated again and again. RN roll number 12, first name, then again roll number 12 is coming up after some names. Those names will be deleted out. अगर नाम है Is it possible in data set you have 3 columns? One is name, second one is roll number, third one is your city of residence. Can I remove duplicates taking only 2 variables at a time, name and city? Can I remove it? I'm not taking your roll number into count. Is there any option where I can skip it? हो सकता है? वेरी गुड। चलिए आप लोगों ने जरूरत से ज़्यादा एक अटेम्प्ट कर दिया, वेरी गुड।